There are so many people who are making such great content. उनकी कोई reach नहीं होती, कोई नहीं दिखता. मुझे लोग बहुत कहते हैं कि it feels like you're talking to us. Maybe I do a lot of eye contact with the camera and I talk about things जो लोग already सोच रहे हैं but they don't have the answers to it. Do you think content creation is a full-time career and people graduating should consider it? यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट कर देना चाहिए. हाँ. आपको फर्स्ट डे से पैसे तो नहीं मिल रहे ना, हर महीने आपको सैलरी नहीं मिल रही. डॉक्टर इंजीनियरिंग की डिग्री से इतना नहीं कमा रहे जितना वो कंटेंट क्रिएशन से कमा रहे हैं. ठीक है. जैसे हानिया आमिर और सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ लाइक कॉमन नॉलेज. बट इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दे अर्न अ लॉट. What drives the revenue exactly? इंस्टाग्राम डज नॉट पे. इन पाकिस्तान आई थिंक बाहर करता है. Yeah. और टिकटॉक भी बाहर करता है, पाकिस्तान में नहीं करता. बट जो व्यूज से पैसे आते हैं ना वो बहुत कम होते हैं. Hello Mina, hello. हेलो, How are you? आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm also good. अच्छा, do you know how to play sequence? सीक्वेंस? हाँ, अच्छा, ठीक है. मुझे याद नहीं है वरना हम वो भी खेल सकते थे. सिखा देती है, बहुत आसान है. साथ साथ चलो नेक्स्ट राउंड में हम वो सीख लेंगे. ओके, पहले ये खेलते हैं, उसके बाद we can ठीक है. remind me how to play it. I suck at board games and all the other games. This is the only safe bet for me. इसलिए मैं मान रही थी कि ये खेल लेते हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ कि how does it feel to be an octopus? It feels good क्योंकि I feel like मैं हमेशा से थी an octopus but I never really understood it. What do you mean when you say that? Like, what part of an octopus do you think you always had in you? The curiosity. Yeah. I've always asked why. My entire life मुझे हर चीज़ को बस जानना था. I always wanted to know everything about everything. इसलिए मेरी education has also been very haphazard. अब engineering की, then I was like नहीं, this is not enough. I did an MBA. तो मुझे जानना था and I felt like nothing was enough. मेरा वो outlet नहीं मिल रहा था मुझे. And through an octopus I found that out. अच्छा, तो ये वाली जो प्रोफाइल है क्यूरियस और इस तरह की, how did you go to learning electrical engineering from having a mind like this? Mechanical engineering, because that's very technical and like how do I put it? Like, it sounds like you have more of an intellectual or curious personality, and I'm not saying that engineering is not for that, but were you sure about that interest as well? Do you like mechanical engineering too? I do. मेरे लिए engineering was more about learning new stuff. मेरा कभी I never planned कि मैं उसको practice करूँ in the same conventional sense क्योंकि engineers are not scientists. When you started engineering, तब भी ये सोचा था कि practice नहीं करनी? नहीं, तब I was in a very different headspace क्योंकि growing up in Pakistan आपको एक दिया जाता है ना कि if you're a good student, Yeah. तो आपके पास कुछ एक दो options हैं. डॉक्टर बनो, engineer बनो, yeah. Even if I wasn't pushed into it, you don't know the paths you have. तो engineering मुझे पता था engineering ही करनी है. and I loved physics. तो I never knew कि physics on its own is an education that I could pursue. Looking back, if I had a choice तब तो maybe I would have gotten into physics instead of I feel like school में physics बहुत boring तरीके से पढ़ाते हैं. As in, maybe I was also into physics. I remember I was never into chemistry or biology as much as I was in physics. But only when I grew up, तो मुझे realize हुआ कि physics सिर्फ books में, textbook में interesting नहीं थी. Like, the entire world around you has physics and everything. So, if you're somebody who's curious, I think you cannot learn about the world without knowing about physics. So that's where you got your interest in engineering from. And the entire world is made of everything. I mean, even chemistry, biology, all of sciences, even philosophy, every subject जो आप उठा के देखो, पूरी दुनिया में वो फैला हुआ है in one way or another. And you're right about the textbook part क्योंकि मैं textbook से खुद ही पढ़ती थी. I used to study on my own. A-levels में तो I didn't even go to school. तो I studied it on my own क्योंकि I wanted to know more than जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था. And you were scoring good then as well. Yeah, क्योंकि it was never about scoring for me. It was always about कि मुझे जानना है बस सब. तो जैसे अब मैं जब 7-8 क्लास में थी तो मैं O levels का पढ़ी होती थी अपनी बड़ी बहन की बुक्स क्योंकि वो तो मुझे. Your siblings must hate you. Because अम्मा अब्बा कहते होंगे मैं नाहिल को देखूं. नहीं. I'm still not enough क्योंकि I'm a middle child. तो वो I could never be as good as the older sister. Okay, she's even better than you. Smarter. अच्छा चलो let's not compare. I don't know. Let's not compare. सब अच्छे हैं. I don't know. सारे बहन भाई अच्छे. अच्छा so MBA फिर इंजीनियरिंग से MBA का कैसे ख्याल आया?
इंजीनियरिंग के बाद मैंने 1 साल कॉर्पोरेट जॉब, इट वाज़न्ट वेरी कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैं ग्राउंड शॉप फ्लोर पे ही होती थी, बट इट फेल्ट वेरी कॉर्पोरेट। वही कि आई वॉज गिवन अ ब्लू प्रिंट कि यार ये डायमेंशंस हैं, ये सब कुछ कराने ब्लू कॉलर वर्कर्स को। आई वॉज जस्ट अ ट्रांसलेटर बीच में कि ये चीज़ें ये बनानी है और फिर प्रोजेक्ट को देखना है। तो इट फेल्ट वेरी रिस्ट्रिक्टिंग कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग हियर। सो डिड यू फील कि इम्पैक्ट नहीं था आपके काम का? हाँ, और मेरी लाइफ पे भी नहीं, किसी और लाइफ के लिए पे भी नहीं। सही, आई वाज सो रिप्लेसेबल। Yeah, you're just part of a huge system that was working and would work irrespective of you being there or not. एंड मे बी मेरा वहाँ होना, आई वॉज पुटिंग ज़ीरो वैल्यू इन, और आई वॉन्टेड, इवन इफ आई वॉन्टेड टू पुट इन वैल्यू, क्योंकि वो सिस्टम एक बन चुका होता है, You can't change much, you can't do much. anything। और फिर मेरा ना, इट्स, I've never been one to listen to someone tell me what to do, क्योंकि I don't know how to put it, लेकिन when someone tells me to do something, it's like I don't want to do it. I don't want to do it anymore. So I fully relate. हाँ, तो इसलिए it was like I don't want to listen to them. मुझे leaves लेनी है, मुझे पूछना पड़ रहा है। Yeah. और I always knew that there is so much more to life. Then just an office, a 9 to 5, a routine. हाँ, तो उसके लिए उधर फिर ऑफिस में ही आई रियलाइज़ कि जो सेल्स और मार्केटिंग और फाइनेंस वाले लोग हैं, देर हैप्पियर, देर डूइंग थिंग्स जो मुझे पता भी नहीं है। और मुझे नज़र आया कि मोर देन इंजीनियरिंग, they were running the business. Yeah. I was like, maybe if I learn how to do what they're doing, or just try to seek इनके job descriptions and what is their role in this entire system. Interesting. तो इसलिए मैंने MBA में गई, और MBA also was like एक prestigious university से एक अच्छी डिग्री है, वो कर लो। तो I went into it. वहाँ जाके it really opened my eyes. I'm really glad I went there, क्योंकि if it wasn't for the MBA, Minoctopus wouldn't exist. How did that help you reach Minoctopus? क्योंकि it opened my eyes to a lot of things, कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। So it's the variety of subjects in MBA that help you understand कि अच्छा इतनी ज़्यादा चीज़ें explore करने के लिए। क्योंकि every single subject, and especially in LUMS, they're really good teachers. Yeah. Everything feels important. Yeah, and you feel like you want to master every subject, especially because you were great at it as well. अच्छा, लेकिन the fact that you did an MBA and the fact that you did it from LUMS, didn't it put more pressure on you? Because LUMS के MBAs एक specific paths के ऊपर they're expected to go. We know कि 3-4 companies हैं जिनके नाम्स rotate होते रहते हैं, नाम्स जिनके नाम rotate होते हैं, और हर कोई उन्हीं के पीछे भाग रहा होता मुझे है। वो नाम पता भी नहीं थे before I got into MBA. Same, मैं यही तो कह रही इंजीनियरिंग में हूँ। इतना आपको बबल में रख दिया जाता है, जैसे मुझे McKinsey, I didn't know what McKinsey was, और मैं गई और मुझे पता चला कि McKinsey ही है। Or the fact that Nestle or Coca-Cola or these are so sought after and people are so crazy about them. लेकिन engineering एक bubble था, लेकिन MBA या business school yet another bubble ही था somehow, in a way that a more interesting bubble, but maybe that was also just telling you कि बाहर निकल के एक बहुत बड़ी business या corporate world है। So I would say कि Minoctopus for sure inspired somehow वहाँ से हुआ होगा. It would have sparked something in you. But I was there as well, so I know कि वहाँ पे किसी ने ये path, this was very unconventional for the LUMS community as well. So वहाँ रहते हुए, while knowing कि people are expecting you to go and ace a corporate job, go to McKinsey, how did you come up with the thought or even the courage to become Minoctopus? Loaded question. Yeah. I have some thoughts about the MBA thing on its own, क्योंकि उसमें I feel like you're given the illusion of power कि आप जब graduate होगे, any trajectory that you have in your career, you're gonna be at the top. आप किसी भी कंपनी को उठा लो in पाकिस्तान, even abroad भी देख लो, तो highest paying jobs, highest position सारे MBAs हैं। पाकिस्तान में वो सारे LUMS के MBAs हैं या IBA के MBAs हैं। Even when you're at the top, तो आप फिर भी किसी और के लिए काम कर रहे हो। आप वही शेयर होल्डर्स हैं। There will always be someone जिसकी आपने सुननी है। तो it's like वो जो illusion of power I could see जब हम MBA भी कर रहे थे, वहाँ पे भी ना there was this hierarchy that formed. जैसे अब DR में हमारे DRs होते थे discussion rooms where we'd come together and like discuss. उसमें भी hierarchy बन जाती थी। कि वहाँ
वहाँ पे lead people करता है, ये weren't सब। sharing, people wouldn't क्योंकि वहाँ the point of the DRs was कि आपने डिस्कस करना है, आपने मिलके करना है, बट वहाँ पे सबसे कम कॉपरेशन होती थी और द स्मार्टेस्ट पीपल जो आपको लग रहा होता था कि यार ये बहुत आगे जाएंगे, वो सबसे कम कॉपरेट करते थे. तो इट शोड मी कि यार यही लोग जाके दे विल गो एट द टॉप. I don't want to be that. I don't want to be associated with that those type I'm of so people. glad you're saying this. हाँ, और मेरा एक प्रॉब्लम भी था क्योंकि आई वॉज स्कोरिंग वेल, लेकिन तो पीपल एक्सपेक्टेड मी टू बी लाइक दैट एज वेल. हाँ, तो doesn't that make it worse in terms of pressure? कि you were scoring well and even teachers and students were expecting कि अच्छा इससे किसी बहुत अच्छे रोल में चले जाना है, बहुत अच्छे corporate रोल में चले जाना है. And now when you've achieved well while doing content creation, तो आसान लगता है कहना कि I chose this path, but back then you didn't know this is gonna be successful, right? But you still chose it. So how did that work? तो I always wanted to teach. ये तो मेरा बचपन से was a lifelong passion of mine. Even MBA में भी I used to teach a lot of people. As a finance, I've never studied finance in my life. पहली दफ़ा मैंने MBA में आके पढ़ा and I liked it so much कि मैं लोगों को पढ़ाती थी और people would be like कि यार तुम पढ़ाती हो तो समझ आ रहा है. तो I realized कि I study things in a way जिसमें जिस तरह लोग जो टेक्स्ट बुक से पढ़े होते हैं, they don't understand it the way I do. क्योंकि I don't know if this is a skill I developed बहुत बचपन में कि whatever I'm studying, whatever I'm doing, it feels like it's the most interesting thing in the world. और कि इससे ज़्यादा कुछ मज़े का नहीं है और फिर it builds an interest in me और फिर वो समझ आ जाती है. How do you bring that interesting aspect out of it? Because देखो सबके साथ ही नहीं होता, किसी को भी अपनी पढ़ाई, वो subject, वो topic interesting नहीं लगता. So because you are a curious person, so many people, other people out there are curious as well. But I feel like ये छोटी-छोटी tricks or you know these little opportunities of making boring things interesting can make such people shine. और बहुत सारे लोगों को realize भी नहीं होता कि वो ये opportunity miss कर रहे होते हैं. तो अगर कोई regular चीज़ पढ़ रहा है, कोई regular degree कर रहा है, and they find it boring or irrelevant or don't have the motivation to learn more about it, how do you tell them to find that interesting part or aspect in that? वो जो irrelevant वाला है ना, the term irrelevant कि जो आप पढ़ रहे हो you don't see कि ये real life में कैसे impact हो रहा है. जैसे you take any subject in the world, I could point out कि ये कैसे relevant है to stuff that I am interested in. अब जैसे talk about finance. अब it's such a boring banking thing कि यार किसको अच्छा accounting लेते even more boring. Yeah. But when you look at it, आप देखते हो कि यार ठीक है accounting is just papers, but then everything is connected to it. पूरी कंपनी का सब कुछ all in and outs, everything is about money. वो एक पेपर में आपको नजर आ रहा है. तो you're like looking at a company through that paper. तो that makes it interesting. जब आप उसके expenses देख रहे हो, आप उसके profits देख रहे हो, it's so much more is behind it. Like when you get into it, तो आपको समझ आती है and it makes it easier to understand it too. I think that works the most for subjects or topics that involve numbers because Maybe I like numbers. That's why. so weird. I did not like philosophy. That's very impressive, but that's so weird. Philosophy एक subject है, जैसे art एक subject है that has no numbers at all. Yeah. But you can find stuff interesting about that as well. I think you really like philosophy, Yeah. right? तो अब for a person who loves numbers, उसको ये subjects नहीं पसंद आएंगे. But if you connect that numbers on a very basic level, it's also philosophy. Exactly. So yes, absolutely. But the thing is that philosophy is like decoding and describing and talking about that number part of the world. And just I'm into physics, but I hate it when it comes to equations and all. I'm like, I don't want to look at that part. मुझे बस उसका impact या उसकी explanation पढ़नी है. So that's the thing. I feel like you're very right. Numbers or no numbers, everything connects back to some impact or some role in the real world. And you're suggesting कि अगर हम उसको real world की अपनी surroundings की किसी भी चीज़ के साथ connect कर दें उसके impact को, तो you can bring the interesting part out of it. Yeah. Yes, you can. अच्छा, moving forward, if we talk about your content creation journey so far, एक चीज़ तो clear है कि you as a person and as a personality align with this work. So that
checks one box. Because एक अच्छे और like सक्सेसफुल करियर के लिए, and we'll discuss कि सक्सेसफुल भी क्या है. I think the first step is कि आप खुद aligned हो. दूसरा स्टेप ये है कि आपने कहाँ से शुरू करना है, उसके बीच में क्या ups and downs आएंगे, and then where it takes you. So how was the journey in that aspect for you? So I started during my MBA, or what got me to that, like वो जो एक होता है ना कि what pushed me to publish my first video was कि marketing class में we were studying about Mr. Beast. तो उसमें एकदम से मुझे नज़र आया कि यार there is this entire online world जिसमें you could reach so many people, और मेरा वो एक teaching वाला part ना was connected to it कि यार maybe I should post videos, I should start teaching people online. और मैं क्योंकि खुद YouTube पे बहुत ज़्यादा videos देखती थी इस तरह की, like maybe I could create something like that. So at that moment you envisioned कि you could make it into something bigger, या you just Not thought at कि एक all. video बना लेती हाँ नहीं, it बस क्योंकि this is not a career in the conventional sense. Yeah, exactly. You don't grow up thinking कि मैंने content creator बनना है. I did not at all. Maybe अब बच्चे the new generation would, क्योंकि उनके लिए this is a viable career path, लेकिन for me it wasn't at all. मैंने videos बनाई and I didn't even expect people to watch them, क्योंकि क्यों कोई देखेगा मेरी video, like I'm a random person on the internet. लेकिन YouTube पे long videos, people started watching them. People around me, like real people that I met, वो बहुत appreciate कर रहे थे. And then online I would get comments कि यार you should post more, you're so underrated. It got me thinking कि यार maybe this I'm doing something good or bad. Yeah, that's so I didn't cool. even I didn't put much thought into it. I was just any topic that I like, उस पे बस I would do my research, write a script, shoot it, edit it, and then just post it. लेकिन नाहिल ये भी तो मसला है कि if you go on the internet there are so many people who are making such great content और उनकी कोई reach नहीं होती, कोई नहीं दिखता. तो क्या सीन है? I'm not the best person to answer this क्योंकि मेरा experience अभी इतना है नहीं. There's a lot of I don't know people, क्योंकि मैं if I look at what people tell me कि why they watch my content, मुझे लोग बहुत कहते हैं कि it feels like you're talking to us, कि आप maybe I do a lot of eye contact with the camera and I talk about things जो लोग already सोच रहे हैं but they don't have the answers to them. क्योंकि जैसे you said कि बहुत curious लोग हैं दुनिया में, but people don't have the time or the energy कि यार वो हर चीज़ का जवाब जाके ढूंढे. I have that. I made a career out of it कि यार मैं I have the time कि मैं चीज़ों में घुसूँ अंदर कि यार ये इस तरह क्यों हो रहा है. Even कि why do we drink coffee? पूरी दुनिया में एकदम से कॉफ़ी बूम क्यों आया? A lot of people wonder about it, लेकिन किसके पास टाइम है जाके ढूंढने के लिए? और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं that are in the back of our heads and we never like pay attention, and when you watch something online, so you're like, oh, I always had this in my mind, and not everybody has the time or the energy to Google or find the answer. So I think उस curiosity पे tap करना was like really cool. But अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा in need थी, तो कोई और ये क्यों नहीं बना रहा था? और वाकई कोई और नहीं बना रहा था? पाकिस्तान में I'm not sure. बहुत बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूबर जैसे मूरू, जनेजो, गंजी स्वैग, उनका बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट है. But I feel like not a lot of people tapped into the science and tech part of it क्योंकि it is a little difficult अगर आप उसमें interested नहीं हो. मेरे लिए it's easier for me क्योंकि मुझे already I do it for fun. मतलब like you said कि you don't like numbers. मैं जब फिजिक्स पढ़ती हूँ ना and I can't understand anything कि यार क्योंकि you need to prove stuff using math. कोई भी साइंस का theory you need to prove it using math. तो I study math ताकि मैं वो समझ सकूँ. अब उस पे मैं videos नहीं बना रही. I'm not making money out of it, but I'm interested in doing those steps. तो इसलिए it's easier for me. And also अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो and if you're good at it, तो आप फिर उससे एक डिफरेंट करियर पार्ट चूज़ करते हो. आप इंजीनियर बन जाओगे, आप साइंटिस्ट बन जाओगे, क्योंकि that's something जिधर this is a very risky thing to do. Alhamdulillah, I've had the privilege in my life कि यार मैं अपना टाइम दे सकी, एनर्जी दे सकी. I started during my MBA like I was not expected to earn money उस time, and I had a few months एक buffer period था मेरे पास. experiment and see where we go. And I stayed very consistent with it as well. I think that is something जो लोग शायद they give up really early, क्योंकि for the first 8-9 months मैं कुछ नहीं कमा रही थी.
और कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द, लाइक माई सिस्टर्स एंड माई फैमिली, दे वुड बी लाइक यार तुम क्यों कर रही हो ये क्या कर रही हो, क्योंकि जब शूट करना होता था मुझे कुछ, तो मैं पूरे घर को बंद करके कि यार कोई कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज आवाज़ आती है, और फिर घंटों सब अपने कमरों में बंद हो जाते थे, कुछ हो नहीं सकता, एंड देन लाइक तुम कर क्या रही हो, व्हाट इज दिस, एंड टू डू दैट फॉर 8 months विदाउट हैविंग एनी मनी कमिंग इन, बिकॉज लेट्स बी रियल, हमारे यहाँ पे इवन आवर फैमिलीज like evaluate success based on how much you're earning. वो 2 महीने 3 महीने देख लेते हैं, then like why are you doing this if you're not earning money out of it? So for other content creators out there, of course if they know कि उनका content अच्छा है, research है, and they're sure that people want to listen to it, is there any like go-to advice or tip that they could use in their entire journey अगर कोई start करना चाह रहा है right after university? First, do you think content creation is a full-time career and people graduating should consider it? And if so, how to like if you could quickly wrap up and tell कि किस तरह से इस पूरी जर्नी को किस स्ट्रैटेजी के बेस पे लेके जाना चाहिए? आई थिंक उनको यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी और जो माइंडसेट उस टाइम पे होता है ना कि यू वांट टू टेक ओवर द एंटायर वर्ल्ड, वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं तो कहती हूँ एवरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शुड मेक एन ऑनलाइन पेज अगर दे वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि लाइक यू कैन लुक एट मिस्टर हुज द बॉस, MKBHD, उन्होंने तो इतने बड़े करियर्स बना दिए यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. बट इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू कि आपको उसमें जितनी एनर्जी और एफर्ट, आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी दैट इट रिक्वायर्स. एवरी डे यू हैव टू मेक अ वीडियो, इवन तो आपको पता भी नहीं है कि यार 1000 लोग भी देखेंगे या नहीं. और शुरू में तो कोई भी नहीं देख रहा होता. हाँ, तो वो अब मेरी तो अब जैसे a lot of my YouTube videos अभी भी don't get a lot of views. Instagram पे I have a consistent audience, but YouTube पे नहीं. But I still keep posting on YouTube क्योंकि I feel like that is more long term. So the strategy, if I could just like 1, 2, 3 what you're supposed to do, even if you don't have a good camera, you don't have a good mic, just start uploading videos. पहली कुछ videos कोई नहीं देखेगा. Mr. Beast says that a lot कि first 100 videos तो आप ना आंखें बंद करके अपलोड कर दो, incremental improvements लाओ, but don't expect anyone to engage with it. And for a very long time शायद नहीं मिले ट्रैक्शन, शायद आपको नहीं वो मोनेटाइज ना हो सके या कुछ भी. there might be a lot of barriers, but अगर आप if you want to do it as a passion project, not as a career, तो तब करो, because it आपको फर्स्ट डे से पैसे तो नहीं मिल रहे ना, हर महीने आपको सैलरी नहीं मिल रही होगी. इफ़ पीपल आर कंफर्टेबल मे बी दे शुड स्टार्ट इट विद अ जॉब, विद अ 9 to 5. लेकिन इफ़ यू आर डूइंग अ 9 to 5 नहीं होती एनर्जी टू क्रिएट कंटेंट एट ऑल. इसलिए मैं कह रही हूँ स्टार्ट young, start early, start in university. Yeah, I think तब energy भी ज़्यादा होती है. You can somehow manage like और expectations भी कम होती हैं. You're not expected to earn or have a full-time job and or make something. content which has a lot of value. अब क्योंकि people can see right through it. उनको नज़र आ रहा होता है कि अगर आप you're pretending to give value but you're not actually giving value. जैसे there's clickbaity content, there आप thumbnails titles इस तरह के कर देते हो that people might वो sustainable नहीं होता. हाँ, people aren't एक दो दफ़ा आ जाएंगे but then they can be like यार ये कुछ we're not learning anything from it. And do what you like. अगर आपको गाड़ियों का शौक है, गाड़ियों पर content बनाओ. If you're into anything at all, don't do stuff क्योंकि आपको लग रहा है इसमें पैसे ज़्यादा हैं. That will never work because it's not true to who you are. So you're saying कि अगर आपको choose करना है कि आपने क्या niche या क्या category choose करनी है, तो the easy way is to follow what you want, what you like or what you're passionate about, instead of this कि what's trending or what people are into. हाँ, क्योंकि ना आप ना उसको sustain कर पाओगे क्योंकि there is going to be a long period of time जिसमें you're not getting anything out of it. तो वो जो टाइम है ना उसको आप कैसे पास करोगे if you're not interested in it? Yes. जैसे अगर मैं अभी न्यूज़ कवर करना शुरू कर दूँ, I'm not interested in what's going on क्योंकि I have my thoughts on that, but मैं नहीं कर पाऊँ. But you can't do it for long, and I feel like there has to be something that keeps you going. Either it's a lot of money, if you're into money, that can keep you motivated. अगर आपका interest नहीं है उस topic में, and since शुरू में पैसे नहीं आते, तो maybe it's your interest and passion that's gonna keep you going. अच्छा, अब मैं आती हूँ असल सवाल पे, ठीक है? Is there money in content creation? A lot of it, but after a point. शुरू में नहीं, शुरू में बहुत देर नहीं है, but जब है, I am surprised कितना ज़्यादा है.
I had no exposure to this industry at all, किसी भी एंगल से. But ये पूरी एक इंडस्ट्री है. There's an entire supply chain जो है. Yeah, that's crazy. And it is actually a career now. Like It is a full-time career. And जो पैसे, क्योंकि content जो वो पैसे कमा रहे हैं ना, I mean the big names, वो कभी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि if they tell you कि वो कितने पैसे बना रहे हैं, तो the fans are gonna go back. They were like, ये तो यार अमीर हो गया. हमसे पैसे बना रहे हैं. हाँ, कि मतलब they're at a point where it's like they're unreachable. Content creators need to be relatable. तो even the big names, even though बहुत पैसे कमा रहे हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा. You can assume कि जैसे हानिया आमिर और celebrities बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि that is like common knowledge. But influencers or content creators, they earn a lot. That's crazy. हम लोग उस दिन I was talking to somebody कि आजकल लोग अपनी डॉक्टर इंजीनियरिंग की डिग्री से इतना नहीं कमा रहे जितना वो कंटेंट क्रिएशन से कमा रहे हैं. ठीक है, it's absolutely crazy. But is it the platforms that pay you, or is it what drives the revenue exactly? Brand deals, the platforms, or what should the new content creators focus on when they start their journey? Platforms, there's YouTube, Instagram, TikTok and Facebook. I don't use Snapchat, तो मुझे नहीं पता उसका. Facebook pays, YouTube pays views पर. Instagram does not pay. In Pakistan I think बाहर करता है. Yeah. और TikTok भी बाहर करता है, पाकिस्तान में नहीं करता. But जो views से पैसे आते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं. Yeah. It's like it's calculated using a rate per 1,000. इतना कम है कि वो I don't even know the math behind it, क्योंकि no one really goes into it. अगर आपके कोई 100 million views आ रहे हैं consistently, then it's a substantial amount. लेकिन उसके अलावा नहीं, especially in Pakistan, क्योंकि conversion rate and हमारे जो ads के through आपको आते हैं ना YouTube पे, like जितने companies pay करती हैं for the ads, तो ads you see जब video शुरू होती है, पाकिस्तान में वो बहुत कम है. तो फिर इसीलिए view जो क्रिएटर्स उनको भी बहुत कम पैसे मिलते हैं. फेसबुक इज गोइंग इनटू गिविंग मोर मनी, बट वो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है. द मेन रेवेन्यू सोर्स इन कंटेंट क्रिएशन इज़ द ब्रांड्स. आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं. यू शुरू में यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ टू मेक वीडियोज ऑन, बट आहिस्ता आहिस्ता दे ऑल्सो पे यू अलॉन्ग विद द फ्री स्टफ. तो उसमें बट एनीवन हु इज motivated by the money in content creation won't make it at all. क्योंकि to get to that point, एक तो आपको बहुत ज़्यादा अपना खुद भी एक ब्रांड बनाना है, अपनी कंटेंट बनाना है. एंड व्हेन आपका गोल है ना कि यार मैंने पैसे बनाने हैं, brands can see it, the audience can see it, और आप your content will never be true to who you are. I don't think you can be motivated by money in content creation. So it is a career, but at the same time, it's fairly a slower career at this point, like to start with. But once you get going, you see that it has a lot of opportunity and space to grow, right? एक और चीज़ ये कि ज़्यादातर पैसे अगर ब्रांड से बन रहे हैं, तो do you think of it as a sustainable career option? Do you think अगले 10 साल में भी brands अपनी marketing कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन और इससे ड्राइव करेंगे, और इज इट अ रिस्की थिंग टू बेट ऑन? At the pace that the world is going, no one can say anything. With AI, I can't be confident in what I say, लेकिन through the years उनका marketing budget to influencers to content creation has increased. अब influencers को भी celebrity status मिलना शुरू हो गया. Billboards पे आपको influencers नज़र आना शुरू हो गए हैं, ड्रामों में आपको influencers नज़र आ रहे हैं. तो हाँ, वो brands shift हो रहे हैं to influencers, क्योंकि they have a bigger audience. Celebrity से आपको audience मिल जाती है, but आपको conversion rate नहीं मिलता to the specific products. और वो connection नहीं होता ना. But AI के आने से, क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, तो I can't say for sure कि brands फिर AI generated content पे जाएंगे या real people. I feel like वो भी bubble burst at some point हो रहा है, because people are growing tired of AI generated content as well. But now you can't tell most of what you see. अभी पाकिस्तान में it's slow because इतना advanced नहीं हुआ, but the companies that have the budget to produce high quality AI videos that are not like
उनको देख के आप बता नहीं सकते, you can't identify or differentiate. And it's gonna get cheaper, it's gonna get more accessible to everyone as time passes. So I feel like so many other careers, content creation का भी you can't say for sure right now okay where it's gonna go with AI But I coming think in. content creation बाकी सब career से कम risky है in the sense के आप अपना एक brand बना रहे हैं. अब worst comes to worst, next year तक by this time no one is calling me कि यार हमारा we're gonna pay you to make content for us. They will make an AI generated version of me. So maybe as AI progresses, IP like वो copyright rules आ जाएं, कोई laws आ जाएं where people pay me to use my face, but you know I don't know how the world is gonna go. Yeah, but at least you have an identity of your own. लेकिन बाकी सब jobs that you see, you're already replaceable in those jobs, but with AI True. it's getting worse. Acha, I'm going to move towards wrapping this up. Two things that I want to wrap this up with. One, do you think people, especially in Pakistan, especially when it comes to women content creators, have learned or are learning to respect them and respect this career in general? I would say that they're moving towards that, but they're not there yet. Yeah. It's worse for lifestyle influencers or models. उनके Yeah. मैं जब comments खोलती हूँ तो there's a lot of hate on Yeah. it. Even though you're looking at that content, but you're still hating on it. मेरा content is very different क्योंकि I make sure कि मेरा जो female aspect है, it's separate from what I'm saying. Yeah. That people focus on what I'm saying. तो उसमें I don't get a lot of hate. मेरे कोई personal attacks. I don't think anyone has ever commented कि मैं like On your female gender. Yeah, they haven't said that. But it is difficult for women on the internet अभी भी. जैसे मुझे ये इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं कि वी अप्रिशिएट यू कि आप मॉडलिंग नहीं करी, आप लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर नहीं बनी, आप इसमें आ गई. बट देन men are in that space as well. Yeah. मतलब what you need models, you still lifestyle content creators are still people who work hard, they're doing something. तो to compare कि यार ये अच्छा या ये बुरा है, I think Basically, the respect that you receive is also given by putting other women down. Yeah. And I know what you're saying because इस तरह if you're making non-lifestyle based content तो उसमें इस तरह के comments आते हैं कि oh you're not doing what other girls are doing while pointing towards it as something less or derogatory. So that still displays the overall light चली गई है और यहाँ पे 3 लोग हमारे लिए torch लेके खड़े हुए हैं. That just makes me wonder कि whether it's little moments like these or journeys like content creation जिसमें इतने ups and downs हैं, इतनी consistency चाहिए. आप अकेले कर सकते हो या कोई support system चाहिए होता है? सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली चाहिए क्योंकि जो वो डाउन्स है ना, आपको कोई चाहिए टू पुश यू कि यार करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो. फिर जो आपको ऑनलाइन इफ पीपल आरंट वाचिंग योर वीडियोस और एंगेजिंग विद योर कंटेंट, यू नीड समवन टू टेल यू कि यार व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, यू शुड कीप. तो इट कैन नॉट वर्क इफ यू आर ऑन योर ओन. आपको कोई कैमरा पकड़ने के लिए भी तो चाहिए. आई मीन तो यू कांट डू इट ऑन. Exactly. While we wrap this up, anything that you want to tell anybody who wants to start their content creation journey or want to do anything unconventional that's not common in their career path or degree? तो a lot of people will tell you कि क्या कर रहे हो. आज भी मुझे my family does not understand what I'm doing and that's okay. I mean उनके लिए it is very new. आपको you need to believe in what you're doing. आपका vision strong होना चाहिए. There are so many people in the world. आप इतनी stories देख सकते हो of people जिन्होंने एक goal बनाया and it was so different from what they had in mind or what society had in mind for them, but उन्होंने वो कर लिया है. If you're actually passionate about anything in the world, आप वो कर लोगे. I am a strong believer of that. So just do what you like but be consistent with it. Work hard towards it. Just don't give up. यार बाकी सब करने नहीं दे रहे. You need to prove it to yourself and to everyone else as well. Yeah. Bye bye. Nice talk.